अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। और मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ बाबू। गाइस बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आता है। कमेंट करते रहें। वीडियो का टाइटल है मेरा खान फ्राम चाहिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना बढ़े चलो यही निदाए वक्त है। ये कायनात, ये ज़मी, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो। जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। My warm greetings to dignitaries. I am Mahira Khan from Chhattisgarh and I am here to speak on the topic of peace building and reconciliation, ushering in the era of no war. Taking pride in India's history is one of the parch prangs given by the Prime Minister in the age of Amrit Kal. And looking back at history, it is a proof that India has always been a harbinger of peace. No war does not mean that we have no reason to fight war. It only means that we give importance to peace by following values of compassion and forgiveness. It was the value of compassion that even after winning the war in Kalinga, Samrat Ashok decided to never wage a war and spend his entire life to preach the message of peace to countries as far as Greece. It was the value of forgiveness that even after the British sent our soldiers to world wars and our farmers to famines, Mahatma Gandhi still chose ahimsa and satyagraha for independence. Taking inspiration from India, Nelson Mandela also chose to forgive the apartheid regime in South Africa. My dear audience, like this year's theme, India for the World, India not only preaches but also practices Vasudhaiva Kutumbakam. In India's G20 presidency, we advocate for a multilateral world in which no one country dominates another country. When China dominated Indo-Pacific, India rushed to help and support ASEAN countries. It acted east. When Sri Lanka needed loans, India was the first to give assurance to IMF. It showed that we believed in neighborhood first. And when Turkey, Syria were hit by deadly earthquakes, India rushed for their aid. It showed our brotherhood. Remember, in 1945, after testing the first atomic bomb, Oppenheimer quoted from Bhagavad Gita, "Now I have become death, the destroyer of worlds." And soon after that, the bombings in Hiroshima and Nagasaki, it was proved that the world does not need a war for peace, but it only needs one war, and that is the war against war itself, exactly what Mahatma Gandhi used to preach. हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध की जरूरत है. And that's why all of us need to unite for one single cause, our planet Earth. The conflicts in West Asia, Africa, and the constant quest for world dominance between USA and China are doing no good for sustainable and equitable development. And this is worse even in the post-COVID era, something which we cannot afford. And in this circumstance, the world looks at India to find peaceful negotiation and conciliation in the midst of Russian-Ukraine war. As the voice of Global South, we believe that few rich countries which have caused maximum war and pollution in the last century should pay for their mistakes by helping and not holding back technologies from poor countries. I understand that we might be divided by borders, but we believe that our culture, sports, and ideas could unite us. And in this condition, the world looks at International Solar Alliance for an equitable solution to green energy transition. Our jawar, bajra, and ragi are being celebrated as superfoods in the world today.
and the world looks at Ayush for a healthy lifestyle. My dear audience, when one youth from Naxal-affected area of Abujmar in Chhattisgarh can strive and participate in international football, it inspires so many of us to strive for a home that is free of conflict and full of opportunities and growth. In each of us lies immense ability to solve any internal or external conflicts through peace, passion and compassion. बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो. Thank you so much. वीडियो आपने देखी, मायरा खान ने जिस तरह के अपनी एक स्पीच के से हमें बताया, सारी दुनिया को आगाह किया भी मेन चीज वार नहीं है यार, जंग अमन नहीं है, सिर्फ अमन है और अमन में उन्होंने कहा इंडिया सबसे आगे है, इंडिया ही वर्ल्ड में अमन चाहता है। वाकई उसकी बात में दम है जी। जंग होगी, मसले बढ़ेंगे और ज्यादा मसले बढ़ेंगे, लेकिन जो सोचता है ना कि वो मुझसे छोटा है, इंडिया छोटा है या पाकिस्तान छोटा है, ये डरपोक है, डर नहीं यार, वाकई उसकी बात को समझा जाए ना तो जंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अमन से कोई रहता है। बिल्कुल अमन जो है ना ये बहुत ही कम लोगों को मैसर होता है, अमन से जीना चाहिए, अमन ही लोगों की खिदमत करना, लोगों के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा होना। जैसे उसने कहा कि इंडिया जो है दोस्तों को और पड़ोसियों को बहुत ही तवज्जो में रखता है। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बताया श्रीलंका को लोन की जरूरत थी तो इंडिया ने उसमें उनको मदद किया, उनको लोन दिया ताकि वो, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हम अगर ना देते तो वो जल्दी दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया हो रहा है बिल्कुल, उसमें उनकी मदद की यार, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें शो में की दिखाई अपना इंडिया के लिहाज से यार। और छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी जो है वो भी उस चीज़ में कमी आनी चाहिए जो है। तो यार बहुत अच्छी स्पीच थी। क्या कहना चाहेंगे बाबू भाई आप, जिस तरह के वो सारी इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए अपना भाषण दे रही थी। बाबू भाई अगर देखा जाए जो भी उन्होंने बोला बिल्कुल राइट बोला, इसमें कोई भी ऐसा हम तो ये नहीं कह सकते कि उसने कोई भी जुमले ऐसे गलत यूज किए, क्योंकि उन्होंने जो भी स्पीच जितनी भी इस दरमियान में दिए ना बिल्कुल उन्होंने राइट पे बोला। ऐसा होना भी चाहिए जैसे कि अब रशिया यूक्रेन के दरमियान जो सारा सिस्टम हुआ तो उसमें इंडिया फास्ट पे इसका भी बीच में उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया ने उनको एक स्टेज पे बिठाने की मतलब कोशिश की है। तो वही मुल्क आगे तरक्की करते हैं जो वो अपने मतलब सोचते हैं अपनी तिजारत पे, अपने कारोबार पे, बिल्कुल तो वही लोग आगे तरक्की करते हैं। और वही कंट्री जो लोग ज्यादा फोकस जंग पे, अपने मतलब मिसाइल पे, ऐसे ऐसे चीजों पे फोकस करता है तो वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका अपनी तरक्की की तरफ तो ख्याल होता नहीं थी। इसीलिए कंट्री वही भाई तरक्की दूसरों को नीच दिखाने से बेहतर है ना कि खुद आप अपने किसी बिजनेस में ऐसे मतलब आपको एटीट्यूड में रहने के बजाय आप अपने आप को मारो, अपने ज़मीर को ख़त्म पहले करो, अपनी इंसानियत को जगाओ, इंसानियत जगा के आप एक काम करो और दुनिया को आप बाशऊर हो के दिखाओ कि हम ऐसे तरक्की कर रहे हैं और ऐसे दूसरों को भी। इनके स्क्वाड गए वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत इमदाद भी उन्होंने दी। बिल्कुल तुर्की में आगे हुआ, मदद किया क्योंकि उन इंसानियत को मद्देनजर। बिल्कुल बाबू, जब आप अपनी ईगो खत्म नहीं करोगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते किसी शोबे में भी। तो इसलिए जो भी उन्होंने बताया सही बताया कि सबसे पहले अपनी ईगो को खत्म करना चाहिए, तो आगे तरक्की करनी चाहिए, अपने अपने मतलब जो भी है सिस्टम उसको कवर करना चाहिए। उसको वो इलामा इकबाल के शेर याद आ गए, कहते हैं दुनिया में बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, अगर मैं अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जल्द दीजिए। अल्लाह।